कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता और ना ही उस पे गुलाब उगते हैं। इसी लाइन के साथ हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हो चैंपियंस, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ B.Sc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले मॉडल पेपर के बारे में। तो हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आपको भी मालूम है ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बचे हुए, एक हफ्ते से भी कम टाइम अब बच गया है हमारे पेपर के अंदर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। आप भी जानते हो हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही और हर क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का देगा। तो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, ग्रुप द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। अलग अलग मॉलिक्यूल दिए गए हैं, आपको इनको ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो पहले H2 और O2 को देखो, ये क्या है? सेम न्यूक्लियर वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मतलब होमो मतलब सेम, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, डाय मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम। सेम न्यूक्लियस के 2 एटम वाले मॉलिक्यूल। फिर हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक में हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट न्यूक्लियस वाले 2 एटम के मॉलिक्यूल, तो HCl हो गया। और हेटेरो न्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा, पॉली मतलब 4 भी मान सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 से ज़्यादा हैं, वो क्या हेटेरो न्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे। हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियस भी है, एक हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। ठीक है, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विथ बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस कितना होता है? 1। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस का 1 होता है, O2 माइनस का 1.5, O2 का 2 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है, तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा, तो O2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर क्या O2 2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर O2 माइनस का, फिर O2 का। फिर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, वाई? तो यहाँ पे लिखा गया है एसिड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर इफ इट कैन लूज hydrogen easily to a base out of acetic acid and fumaric acid. Fumaric acid is considered stronger because the CH3 in acetic acid is electron donating. This is all because the CH3 is an electron donating group, so formic acid is stronger than acetic acid. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है, RS कन्फिग्रेशन नाम देना था। आगे बढ़ते हैं। नेम 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट डिवाइस। तो an input device convert data and instruction into binary form so that it can be accepted by the computer. Example, keyboard, mouse, scanner. The computer output unit consists of following device: monitor, printer, plotter. सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर 8 में से मार्क्स कोई भी 5 कर देते हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। पहला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन एंड लैटिस एनर्जी ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर? एक्सप्लेन। तो व्हेन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, its crystal lattice is ruptured and the ionic solid is dissolved in the solvent. This is because there is a strong interaction between the ions and the solvent, that is solution of ions takes place. If the solvent is water, the process is called hydration of ions. The solution of ions is an exothermic process and it liberates a large amount of energy known as solution energy. This energy is utilized for rupturing crystal lattice of an ionic solid. The solvent which have high dielectric constants such as water are good solvents for ionic solids, whereas the solvent which have low dielectric constants such as benzene are not good solvent for ionic solid. Thus, for an ionic solid to dissolve in water, solution energy of ions should be greater than its lattice energy. If solution energy of ions is less than lattice energy, the ionic solid is insoluble in water. Explain structure of following on the basis of Weisbach theory: I3 minus H2O, SO4 2 minus. तो पहले बात करते हैं I3 माइनस का। तो इन I3 माइनस आयन आयोडीन atom is sp3 hybridized. Out of these, one hybrid orbital contain one electron. If it form bond with one iodine atom and consists shared bond pair of electron on one hybridized orbital except lone pair of electron atom I minus IN, the remaining 3 hybrid orbital contain lone pair of electron as shown in figure as shown below. I मतलब आयोडीन का एटम नंबर 53, उसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s2 5p5, और जब क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ I in I2 माइनस का 5s2 5p6, और I2 में I माइनस जोड़ देंगे तो I3 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ I in I3 माइनस का ये हो जाएगा
हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्रॉस का इंडिकेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय I माइनस आयन, ठीक है। दिस गिव द मॉलिक्यूलर trigonal bipyramidal structure, but due to the presence of three lone pair of electrons, the shape of molecule is distorted and the molecule assumes a low linear structure. According to band rule, two iodine atom in I3 minus ion occupy axial position and the three lone pair of electron occupy equatorial position as shown below. वाटर की बात करते हैं इन सेकेंड water molecule has oxygen atom is sp3 hybridized. Out of these two hybrid orbitals contains one electron each from bond with two hydrogen atoms and contains shared bond pairs of electrons, whereas the rest of two hybrid orbitals contain lone pair of electrons. The bond angle in this case is further reduced to 104 degree Celsius because of the two lone pair of electrons repel each other more strongly and cause the two OH bond pairs to come closer to each other than in the case of ammonia. Due to this distortion in bond angle, the resultant structure of water molecule is V-shaped. Oxygen atomic number 8, electronic configuration 1s2 2s2 2p4, electronic structure of oxygen in water 1s2 2s2 2p 2p4 ही होगा। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जो हल्का डैश से दिख रहा है ना, हल्का डॉटेड एरो से दिख रहा है 2p के अंदर, वो क्या है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाटर का शेप हो गया। SO4 2 की बात करते हैं। The atomic number of sulfur is 16 and in the ground state its outermost cell electronic configuration is 3s2 3p4. In the excited state, one electron each from s and p orbital are excited to vacant d orbital in SO4 2 ion. Sulfur ion is sp3 hybridized, hence this ion has tetrahedral geometry. Out of 4 oxygen atom to have extra electron with the result SO4 2 ion carry 2 minus charge. The 4 hybridized orbital containing one electron each from a sigma bond with 4 oxygen atoms. The two half-filled d orbitals form pi bond with 2 oxygen atoms. Thus 2 oxygen atoms are bounded to sulfur atom by double bond and rest 2 by single bond as shown below. सल्फर हो गया एटॉमिक नंबर 16, 3s2 3p4, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3p3 3d2 हो जाने वाला है, जहाँ पे 4 ऑक्सीजन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। 3d वाले ये हो गया हमारे पास SO4 2 का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन व्हाइल द second ionization potential of oxygen is greater than nitrogen. Why? So we know that ionization potential is defined as the energy required to remove a loosely bounded electron from the valence orbital of an isolated gaseous atom. We can answer this question by looking at the electronic configuration of both oxygen and nitrogen. The electronic configuration of nitrogen and oxygen are given as below. Nitrogen 1s2 2s2 2p3, oxygen 1s2 2s2 2p4. We can see that the nitrogen atom has half-filled atomic orbital and hence it will be more stable than the oxygen atom. Therefore, the first ionization energy of nitrogen is greater than oxygen. But when we consider second ionization energy, oxygen ion OA plus attain half-filled electronic configuration and become more stable. Therefore, the second ionization energy of oxygen is greater than that of nitrogen. Explain difference between inductive effect and electromagnetic effect. तो inductive इधर, electromagnetic इधर. The polarization of single sigma covalent bond due to the electronegativity of difference between the bonding atoms is called inductive effect. The complete safety of pi bond electron pairs of a double bond or triple bond to one of the atoms joined by it in the presence of suitable electrophilic reagent is called electromeric effect. It is permanent effect. It is temporary effect. It doesn't need a presence of reagent. It needs a presence of electrophilic reagent. आगे बढ़ते हैं। What are structural difference between singlet carbon and triplet carbon? Explain. तो पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन होता क्या है, तो कार्बन आर न्यूट्रल डायवलेंट हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग टू सिंगल बॉन्ड एंड टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन। इसका कार्बन का स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे ही होता है, C उस पर लोन पेयर एक होता है और XY अलग अलग आइटम से। सिंगलेट कार्बन के बारे में बात करते हैं तो सिंगलेट कार्बन हैज a spin of its non-bonding electron pairs spin multiplicity m = 1. This non-bonding electron pairs is in as sp2 orbital leaving a vacant p orbital. देखो ये हमारा सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन का। इन द ट्रिपलेट कार्बन द टू non-bonding electron have parallel spin and both the sp2 and p orbitals contain one electron each, ठीक है। ये हो गया ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर।
and the triplet carbene with their unpaired electron exhibit properties of di radicals. फिर क्या अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टाइटेरिक एसिड. तो ऑर्डिनरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन perpendicular to the path of its propagation. The same is the case with the light of a single wavelength, that is a monochromatic light. This vibration can be made to occur in a single phase polarization by passing ordinary light through the polarizing nickel prism made of catalytic spatial crystalline form of CaCO3. Such light whose vibration occur in only one plane is called plane polarized light. The polarization of the ordinary light transmitted through a nickel prism is easily detected by weaving through a second nickel prism called analyzer. Compounds which rotate the plane of polarized light are called optically active compound, and this property is known as optical activity. If the compound rotates the plane of polarization to the right, it is said to be dextrorotatory, and if the rotation is to the left, the compound is said to be leave rotatory. आगे बढ़ता है, राइट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट. ठीक है, तो बस कंप्यूटर कंपोनेंट का डायग्राम बनाना है, बता ही सकते हो. कंप्यूटर बना देना, सीपीयू बना देना, माउस कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह बना दोगे, डायग्राम भी बनाना है ना. तो हमने डायग्राम नहीं बनाया. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स डी एक्स को. तो पहले क्या करते हैं, नोमरेटर डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ऊपर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे टर्म बन जाएगा. नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म बन जाएंगे. हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया. उससे सिंपली बचा क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर बचा. अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया. अब टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया. अब क्या करते हैं, सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स. अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे. टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर कर लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स एक्स मिल जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक एक्स टेन एक्स कितना हो जाएगा, टू बार सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो जाने वाला है. ठीक है, ये मिल गया आंसर. सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. 8 में से कोई भी 4 करना था उस टाइम पे. हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, हाउ इट इज यूजफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, स्ट्रक्चर एंड परसेंटेज यानी कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो पहले डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे. इन केमिस्ट्री डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और द सेपरेशन ऑफ अपोजिट इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन इट. बात करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी. तो द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट डिटरमाइन द पोलर कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड. द डायपोल मोमेंट ऑफ HF, HCl, HBr and HI are 1.92 divided 1.04 divided 0.78 divided and 0.38 divided respectively. This show that polarity of HH bond decrease from HF to HI. In the determination of molecular structure, the carbon dioxide molecule has a zero dipole moment, although each of the carbon oxygen bond has permanent dipole moment. This is possible only if the molecule is linear. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, because in the case the dipole moment of on one side a molecule is cancelled by the on the others on vector addition. Similarly, the molecule of CH2 is also linear. The dipole moment of BF3 CH4 CCl4 benzene is zero. This indicates that those compounds have symmetrical structure. In the determination of percentage ionic character of covalent molecule, the polarity or ionic character of a covalent bond depends on the difference in the electronegativities of two atoms that share the pair of electron. The greater the difference in the electronegativity of the two atoms, the greater will be the polarity of or ionic character of the bond formed between the atoms. आगे बढ़ते हैं. What is hybridization? Discuss the geometry of following molecule on the basis of hybridization: NH3SO4 H3O+. तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो बताएंगे. द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ entirely new orbitals of identical shape and energy known as hybridization. And the new orbital also formed are called hybrid orbital. The bond formed by these orbital are stronger than the bond formed by the pure sp or d orbitals. पहले बात करते हैं अमोनिया के बारे में. तो इन अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन आटम is sp3 hybridized. Out of these 3 hybrid orbital are used for bond formation and the contains a pair of electron, whereas the fourth hybrid orbital contain a lone pair of electron. The bond angle in the case is reduced from 109.28 degree to 106 degree 45 minutes, because the repulsion between lone pair and shared pair is greater than that of between the two shared pair due to sp3 hybridization. The geometry is tetrahedral. ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया और उसका ये स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, स्ट्रक्चर वो बनाना भूल गया था तो बाद में इसे रफली बना दिया. ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा. SO4 के बारे में बात करते हैं. इन SO4 molecules are per atom is sp3d hybridized. Out of these 4 hybrid orbital containing
one electron each from the bond with the 4 fluorine atom and contains shared pair of electron, whereas one hybrid orbital contain lone pair of electron as shown below. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर हो गया. मॉलिक्यूलर शुड हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है, S3O+ के बारे में बात करते हैं. तो इन दिस आयन ऑक्सीजन atom is sp3 hybridized to have a hybrid orbital containing one electron each from bond with 2 hydrogen atoms and containing shared pair of electrons, whereas one hybrid orbital containing a lone pair of electron from this bond with H plus ion. The fourth hybrid orbital containing a lone pair of electrons remain unused. The resultant shape of molecule is pyramidal just like ammonia. जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर है ना, सेम वैसे ही S3O+ का भी होने वाला है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस पॉलिंग स्केल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैटर रूल. तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर बोथ properties of atom that relate to the behavior of electron, but they differ in the focus and application. पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. तो an atom's tendency to attract electron or in a chemical bond, it's a chemical property that helps determine the polarity of a molecule and predict chemical reactions. Electronegativity is measured relative to other atomic properties and varies depending on the chemical environment. Electron affinity, the amount of energy released when an atom or molecule gain an electron forming a negative ion. It's a fixed and measurable value. बात करते हैं पॉलिंग स्केल के बारे में. पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ही कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ AB कोवेलेंट मॉलिक्यूल एज हाफ A2 प्लस हाफ B2 एरो AB हाफ AA. A2 मतलब A और A क्या आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस हाफ B भी आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे क्या AB का फॉर्मेशन होता है. अकॉर्डिंग टू पॉली द बॉन्ड एनर्जी, bond dissociation energy EAB of covalent molecule AB is always greater than that of geometric mean of the bond energy dissociation energy of AA and BB of A2 and B2 molecule, that is EAB greater than EAA into EBB पावर 1/2. पावर 1/2 मतलब रूट में रहेगा. स्लैटर रूल के बारे में बात करते हैं. द स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इज कांस्टेंट एंड effect nuclear charge and effect are related to each other as Z effect is equal to Z minus sigma, where Z is the atomic number and sigma is the scaling constant. The electron present in different cell give their own contribution toward the value of sigma. The sum of these values give the value of sigma. आगे बढ़ते हैं. what is resonance, give rules of resonance, discuss effect of resonance on acidic and basic properties of organic molecule. तो पहले resonance और mesomerism involve the localization in conjugated system. As a result of this, displacement of electrons centers of low and high electron density in conjugated system are created with in turn affect their physical and chemical properties. The generation of low and high electron density in conjugated system as a result of the phenomena of resonance is called resonance effect. Thus, the group present on benzene ring or on the triple vinylic carbon of the conjugated system can be classified into two categories. पहला प्लस R ग्रुप और M प्लस M ग्रुप. सेकेंड नहीं, इसी के अंदर बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में. तो द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन to the benzene ring by resonance effect is known as plus R group. If key atoms has a negative charge or has at least one lone pair of electron, then the group will be plus R group. एग्जाम्पल उसके कुछ दिए गए हैं. फिर प्लस आर पावर ऑफ ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज फॉलोज. ऐसे क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर घटता रहता है. आगे बढ़ते हैं. माइनस आर ग्रुप के बारे में बात करते हैं. दिस ग्रुप विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आर ग्रुप. इफ इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं. इसकी एटम्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज और की एटम हैज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड, देन ग्रुप इज माइनस आर ग्रुप. जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. और माइनस आर पावर ऑफ ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज. ऐसे ऑर्डर में करंट घटता रहता है, एनर्जी उसका. आगे बढ़ते हैं. डिफाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, डिस्कस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायंस. तो पहले इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करते हैं. होते क्या हैं. तो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड विजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लाइव्ड दिस कार्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. दिस शॉर्ट लाइव्ड इंटरमीडिएट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड आर quickly converted to more stable molecules. However, under certain circumstances they are of sufficient stability to be isolated and study. The four most common kind of reaction intermediate with fewer than 4 covalent bond at carbon are ये हो गया हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट के एग्जांपल. अब बात करते हैं जो मेन दिया है कार्बोकेटायन के बारे में. ठीक है, तो all the cations in which the positive charge is carried out by a carbon are called carbocation. These are reactive intermediates in a large number of organic reaction. The
The reaction for their reactivity is that the carbon has only 6 electrons in the valence L and has a great tendency to complete its octet structure के बारे में बात करते हैं. तो कार्बन आइटम of carbocation is sp2 sp hybridized in which the p orbital is devoid of any electron. The 3 bonding orbital form 3 sigma bond. The remaining p orbital is vacant. This vacant p orbital makes the carbon atom electron deficient and give it to a positive charge. The carbocation thus has a planar structure having all the 3 sigma bond in the one plane with the bond angle of 120 between them. ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. आगे की बात करते हैं स्टेबिलिटी. तो द cycloheptarynyl cation is an exceptionally stable carbocation which can be isolated and studied. At the other extreme is the methyl carbocation, which is so unstable that it has never ever been detected as an intermediate in an ordinary chemical reaction. In between these two extremes there exists a whole spectrum of carbocations. Some can be isolated, some can be detectable but not isolable, and other can be generated only under extreme condition. कुछ एग्जाम्पल कार्बोकेटाइंस के ये दिए गए इनके स्टेबिलिटी की बेसिस पे. ठीक है, आगे की बात करते हैं. फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 2x² माइनस एक्स क्यूब. तो पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x माइनस के 3x² मिल जाएगा. फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 6x मिलेगा. मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 रख के x का वैल्यू निकालते हैं. तो x का वैल्यू 0 या 4/3 मिल जाएगा. x का वैल्यू 0 पे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं. कितना आता है 4 मतलब पॉजिटिव नंबर. तो 0 पे क्या होगा, मिनिमा होगा. फिर x इक्वल टू 4/3 पे निकालते हैं डी स्क्वायर या वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू. तो -4 आएगा मतलब निगेटिव वैल्यू. निगेटिव मतलब मैक्सिमम आएगा किस पे, 4/3 पे. आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज कंप्यूटर कोड? डिस्कस पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. आल्सो फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट टू 3910. तो पहले कंप्यूटर कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं. अल्फा न्यूमेरिक डाटा आल्सो रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड बाय अ कंप्यूटर. एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा इज अ स्ट्रिंग of symbols where a symbol may be one of the letters or digit or a special letter. When numbers, letters or word are represented by a special group of symbol, they are said to be encoded and the group of symbol is called a code. The digital data is represented as stored and transmitted or as a group of binary bytes. The group is also called a binary code. The binary code is represented by the number as well as alphanumeric data. Personal computer operating system. Operating system is a software loaded into computer memory for ensuring and control and proper working of computer hardware. No computer can work without an operating system. The reason for it is that the system of working of each part of computer is defined in operating system program. तो कुछ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं. जैसे पहले बात करते हैं डॉस के बारे में. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट in 1981. For the personal computers in the system, the user gives text-based command for all the operations like copy, delete, etc. The commands have to be given in a specific format known as syntax. Otherwise, the error is reported by the system as an interface. It is the character-based command. It is known as the character user interface (CUI). विंडोज़ के बारे में बात करते हैं. दिस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड यूज्ड फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द पॉइंट एंड क्लिक टेक्नोलॉजी. द कमांड्स वेर रिप्लेस्ड बाय graphical icons image on the console and the user has to click and this icons to perform different tasks. They need not cram the command or their syntax as a interface in Windows. The graphics, it is known as graphical user interface (GUI). The credit of bringing to our home goes to GUI operating system. The ease of its use had uses led to virtual revolution around the world in uses of home computers. These days, the popular version of Windows operating system are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, etc. अब 3910 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं. तो बस सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या मिल जाएगा, 10011 ब्रैकेट 2 मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी के साथ पूरा पेपर कंप्लीट होता है.